वेलकम बैक टू माई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 2 ऑफ केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम or central government exam, then this topic is most important for your preparation because you know in your exam science topic contains 10 marks weightage. So friends, our aim should be to get 10 out of 10. So without wasting time, let's start. Question number 21 is, earlier we have discussed 20 questions, so today we will start from question number 21. Ethene is composed of, here the options are: A is 2 carbon and 3 hydrogen atoms, B is 1 carbon and 1 hydrogen atom, C is 2 carbon and 4 hydrogen atoms and 3 जो कि डी पार्ट है वो है 3 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम। सो गाइज, गेस द आंसर। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इथेन इज कंपोज्ड ऑफ, हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2 कार्बन एंड 4 hydrogen atoms. Option C. This is the answer of this question. 2 carbon and 4 hydrogen atoms. Question number 22 is, to make flexible items a substance is added to PVC. This substance is known as, देखो, to make flexible items a substance is added to PVC. PVC में कौन सा ऐसा substance डाला जाता है जिससे जो है आइटम्स क्या हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। सो A is ester, B is ketone, C is haloalkene and D is plasticizer. So guys, guess the answer. Question number 22. Here the right answer is plasticizer. To make flexible items, a substance is added to PVC. This substance is known as plasticizer. Option D is the right answer. Let's move to next question. Symbol of sulfur is, most important question. Symbol of sulfur is, A is Fe, B is Su, C is S and D is Ti. So guys, guess the answer. Symbol of sulfur is, question number 23. Here the right answer is option, I hope आपने टिक कर लिया होगा, C, that is S. सल्फर का क्या होता है, सिंबल S होता है। ऑप्शन C is the right answer. Question number 24 is, natural substances made up of long molecules are, नेचुरल सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ लॉन्ग मॉलिक्यूल्स आर, जो नेचुरल सब्सटेंसेज हैं जो कि लॉन्ग मॉलिक्यूल के बने होते हैं वो कौन कौन से हैं। ए इज़ प्लास्टिक एंड रबर, बी इज़ रबर एंड वूल, सी इज़ वूल एंड प्लास्टिक एंड डी इज़ वुड एंड प्लास्टिक। सो गाइस, गेस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा, रबर एंड वूल। नेचुरल सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ लॉन्ग मॉलिक्यूल्स आर rubber and wool. This is the right answer. Next question is question number 25. Density of gases is, A is lower than liquids but higher than solids, B is lower than solids but higher than liquids, C is higher than solids and liquids, D is lower than solids and liquids. Density of gases is, so guys, guess the answer. Question number 25. Here the right answer is, density of gases is लोअर दैन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो डेंसिटी ऑफ गैसेस होती है वो लोअर होती है किससे, सॉलिड और लिक्विड से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 इज, शेप ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द, ए इज़ शेप ऑफ कंटेनर, बी इज़ शेप एरिया ऑफ कंटेनर, सी इज़ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड डी इज़ मास ऑफ कंटेनर। शेप ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द, सो गाइज गेस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, हियर द राइट आंसर इज़, shape of liquid depends on the shape of container. This is the right answer. Option A is the right answer. Shape of liquid depends on the shape of container. Next question is question number 27. Fixed position of particles in solid is due to, fixed position of particles in solid is due to, A is kinetic energy, B is force of attraction, C is pressure on atoms and D is, so guys, here only 3 options are given. Fixed position of particles in solids is due to, A is kinetic energy, B is force of attraction, C is pressure on atoms. So guys, guess the answer. Question number 27. I hope आपने आंसर गेस कर लिया होगा। Fixed position of particles in solids is due to, here option B is the right answer, that is force of attraction.
fixed position of particles in solids is due to force of attraction. Question number 28. Number of atoms in one molecule of ethane is. Number of atoms in one molecule of ethane is A is 2, B is 3, C is 4, D is 6. So guys, guess the answer. Number of atoms in one molecule of ethane is. Here the right answer is question number 28. यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका 6, ऑप्शन डी. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एथेन इज 6. नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एथेन इज 6. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. Photosynthesis is an example of. A is condensation reaction, B is exothermic reaction, C is reversible reaction, and D is endothermic reaction. So guys, guess the answer. Question number 29. Photosynthesis is an example of. Here the right answer is 29. Question number 29 का जो right answer है that is option D, endothermic reaction. ठीक है, photosynthesis is an example of endothermic reaction. Question number 30 is respiration is a. A is physical process, B is chemical process, C is biological process, and D is temporary process. So guys, guess the answer. Respiration is a. Question number 30. Here the right answer is option B, that is chemical process. Respiration is a chemical process. Next question is to make PVC molecules of vinyl chloride are. क्या करते हैं, उनको कंडेंस्ड करते हैं, फर्दर हीटेड करते हैं, ट्रीटेड विद एमोनिया करते हैं, या गैदर्ड टू फॉर्म ए चेन करते हैं. सो गाइस, गेस द आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. टू मेक पीवीसी मॉलिक्यूल्स ऑफ विनाइल क्लोराइड आर. हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 31. राइट आंसर यहाँ पे क्या है? टू मेक पीवीसी मॉलिक्यूल्स ऑफ विनाइल क्लोराइड आर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज गैदर्ड टू फॉर्म ए चेन. Question number 32 is when particles cool down, energy changes. A is from kinetic to heat, B is from kinetic to potential, C is from potential to kinetic, and D is from thermal to potential. So guys, guess the answer. When particles cool down, energy changes. I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. When particles cool down, energy changes. Question number 32. Here the right answer is option B, that is from kinetic to potential. When particles cool down, energy changes from kinetic to potential. Option B is the right answer. Question number 33 is color of magnesium oxide is. A is white, B is blue, C is grey, D is pink. Color of magnesium oxide is. This question is important. So color of magnesium oxide is. I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. Question number 33. Here the right answer is white. Color of magnesium oxide is white. Option A is the right answer. Question number 34. Ammonia fertilizers are made by two components. They are ammonia fertilizers are made by two components. They are A is ammonia and hydrogen, B is ammonia and nitric acid, C is nitrogen and hydrogen, D is nitrogen and water. So guys, guess the answer. Question number 34. Here the right answer is. I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. Ammonia fertilizers are made by two components. They are ammonia and nitric acid. Option B is the right answer. 34 का B option. Next question is question number 35. During chemical reaction, energy is A is taken in, B is given out, C is given or out are taken in. During chemical reaction, energy is A is taken in, B is given out, C is given out are taken in, and D is transferred. During chemical reaction, energy is. I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 35. Here the right answer is option C, that is given out are taken in. During chemical reaction, energy is given out are taken in. Next question is question number 36. Particles are packed closely and tightly in. Particles are packed closely and tightly in कहाँ पे, किसमें? Question number 36. Here the right answer is. यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वो हैं सॉलिड्स, semi-solids, liquids, gases. Particles are packed closely and tightly in. Guys, guess the answer. Here the right answer is 36 का जो right answer है वो है आपका option A, that is solids. Particles are packed closely and tightly in solids. Next question is question number 37. Wood is A is fuel, B is alkane, C is alkene, and D is coal. Wood is a. Options हैं fuel, alkane, alkene, coal. So guys, guess the answer. Question number 37. Here the right answer is
Wood is a fuel. Wood is a fuel. Option A is the right answer. Guys, these questions are most important for your preparation. Question number 38 is strongest force of attraction is found in. Strongest force of attraction is found in A is fluids, B is liquids, C is gases, and D is solids. So guys, guess the answer. Question number 38. Here the right answer is solids. इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? सॉलिड्स. दिस इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्या था क्वेश्चन? ये था स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फाउंड इन सॉलिड्स. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फाउंड इन solids is the right answer. So option D is the right answer. Question number 39 is solids that flows like liquids are A is glass, B is plastic, C is gel, D is all of the above. Solids that flow like liquids are. Question number 39. Here the right answer is solids that flow like liquids are. क्या कौन से होते हैं? ग्लास होता है वो. Solids that flow like liquids are glass. Option A is the right answer. Next question is question number 40. Ethene is also known as. Most important question. Ethene is also known as A is ethane, B is methane, C is ethylene, and D is borethane. So guys, guess the answer. Ethene is also known as. I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. Here the right answer is question number 40. Option C, that is ethylene. Ethene is also known as. Ethene is also known as. Ethene is also known as ethylene. ठीक है, जो इथीन है उसे इथिलीन भी कहते हैं, या के नाम से भी जाना जाता है. इथीन इज आल्सो नोन एज इथिलीन. दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो गाइज टुडे वी हैव कंप्लीटेड 40 क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट वीडियोस. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स. बहुत कम दिन बच गए हैं एग्ज़ाम में, सो अभी से जो है आप फास्ट ट्रैक मोड पे आ जाइए. ठीक है, अच्छे से जो है सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कम 3-4 बार रिवाइज कीजिए, ताकि जो हमारा मिशन है वो सक्सेसफुल रहे. सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन. प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल. इसका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसका पार्ट 3. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.